Hello everyone. So this is the second lecture which is based on question asked on vector spaces in CSIR NET examination. So we continue with the next question. In the previous video we have solved the first 4 questions. So the fifth question is, we have been given 6 vectors from alpha 1 to alpha 6 and they are 6 dimensional. हमें check करना है what is the dimension of the vector space which is spanned by these vectors. So what we have to do, basically हमें check करना है कि they are linear independent or not, because they are spanning set that is given. So linear independent plus spanning set forms the basis. We all know that if the set is linearly independent and its linear span, let's say the set is S, the linear span equal to the vector space, then we say that the set S is forming a basis of that vector space, और इसका जो dimension होगा that will be number of element of the basis. So this is the approach. Since it is already given spanning, we have to just check कि ये alpha 1 से alpha 6 तक linearly independent है कि नहीं. उसके लिए हमें check करना है. We can take them in the form of rows of a 6 by 6 matrix, और हम चेक करेंगे उसको रो इकोलॉन फॉर्म में रिड्यूस करके कितने उसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं, या बेसिकली दूसरे टर्म में बात करें तो नॉन जीरो रोज विल बी गिविंग अस द डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस. सो दैट इज द कंसेप्ट. सो हमें वही चेक करना है, लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ दिस वेक्टर बाय रो रिडक्शन. सो सबसे पहले हम इस वेक्टर्स को लिख लेते हैं in the form of rows of a matrix. Let us write down the first row as the first vector, which is alpha 1, that is 1 1 0 1 0 0. Next is alpha 2 1 1 0 0 1 0. Then we have 1 1 0 0 0 1. Next 1 0 1 1 0 0 and 1 0 1 0 1 0. Last alpha 6 is 1 0 1 0 0 1. So this is the matrix जो कि हमें दे रखा है. Now हमें इसको रो reduced echelon form में ले जाना है. So if we apply the operation R2 minus R1 in R2, similarly in R3 में हम वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे R3 minus R1 and so on till R6 तक हम ये करेंगे R6 minus R1. So वहाँ पे हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा what it will be 1 1 0 1 0 0. Now R2 minus R1 अगर करें हम, so what we get, और टोटल हमारे पास टोटल दो हमारे पास जीरो रोज है, 4 नॉन जीरो रोज. सो हमारे पास जो डायमेंशन होगा वेक्टर स्पेस V का that will be equal to 4. Hope you understood. So basically this is the concept. रो reduced echelon form में कितने number of non zero rows हैं, that gives us the dimension of the vector space. Let us move to the next question. और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अगर हम देख लें, so that is going to be option number C. Moving to the next question. अगेन हमारे पास 3 सेट दिया हुआ है, चेक करना है कौन सा इसमें से बेसिस फॉर्म करेगा. तो सबसे पहला डायमेंशन अगर चेक करें हम, नंबर ऑफ एलिमेंट सब में इक्वल टू 4 है, तो बस हमें ये चेक करने की जरूरत है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं. सो उसके लिए वी विल चेक वन बाय वन. अगर हम B1 को देखें, B1 में हमारे पास एंट्रीज क्या दी हुई है, उसको अगेन रो के फॉर्म में लिखेंगे 1 0 0. देन वी हैव 1 1 0 0 1 1 1 0 और यहाँ पे 1 1 1 1. अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, दिस इज द डायगोनल एलिमेंट, करेक्ट.
और डायगोनल के एलिमेंट के सारे के ऊपर एलिमेंट, डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट है दे आर ऑल जीरोस, सो दिस विल फॉर्म, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, सो इट विल फॉर्म अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट अगर हम देखें B1 का, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सारे 1 है तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 1 विच इज नॉन जीरो, सो वी कैन से दैट दिस B1 सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, करेक्ट। और इसका डायमेंशन जो है ऑलरेडी 4 है, इक्वल टू R4 का डायमेंशन, सो इट विल फॉर्म अ बेसिस, ओके। सिमिलरली हम B2 को अगर चेक करें, इट इज 1 0 0 0 1 2 0 0, देन अगेन 1 2 3 0 और लास्ट में है 1 2 3 4। अगेन ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और यहाँ से अगर हम B2 के डिटर्मिनेंट को फाइंड करें, सो दैट विल बी 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 comes out to be 24, again non zero, so this is also linearly independent। लेकिन अगर हम B3 को देखेंगे, so let us see B3 here, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 और -5 5 0 0। यहाँ पे अभी हमें इसको कन्वर्ट करना होगा रो इकोलॉन फॉर्म में, करेक्ट। सो अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करें, फर्स्ट रो वी राइट एज इट इज और सेकंड रो को भी एज इट इज लिखते हैं, थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट रो के साथ, सो वी गेट 2 minus 1 is 1, 1 minus 2 is -1 and we get 0 and 0। Similarly, जो हमारा ये थर्ड रो है, इसको सेकंड रो के 5 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, we will get 0 everywhere। Can you see this? So यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, 3 नॉन जीरो रोज है, but the dimension of R4 is 4, so we say that this is not linearly independent, not linearly independent। You did not perform the same operation as I did, बट हमारा एम यही है कि उसको रिड्यूस करना है इकोलॉन फॉर्म में और चेक करना है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, B1 B2 आर फॉर्मिंग द बेसिस बट नॉट B3। होप यू अंडरस्टूड। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सेवेंथ वन, वी हैव बीन गिवन 3 सेट, हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा जो सेट है दैट इज फॉर्मिंग अ वेक्टर स्पेस। सो वेक्टर स्पेस होने के लिए हमें पता है कि चेक करना है बस ये कंडीशन, क्या वो क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं। तो S1 और S2 में अगर देखें, S में ऐसा f फंक्शन है जिसका 3 पे लिमिट जो है एज x टेंडिंग टू 3, उस फंक्शन का लिमिट 0 हो जा रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको चेक करना है हमें, तो यहाँ पे अगर हमने माना इसमें दो फंक्शन बिलोंग करते हैं, लेट f और g बिलोंग करता है s में, सो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 f 0 हो जाएगा और लिमिट x टेंडिंग टू 3 g भी 0 होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 अगर हमें f प्लस g करना हो, so we will get 0 plus 0 which is ultimately 0 only। Similarly अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 अल्फा टाइम f करके, जहाँ पे अल्फा हमारा स्केलर है, वो भी क्या होगा, अल्फा टाइम 0 ही मिलेगा which is ultimately 0। So this both satisfying the condition that it is closed under addition and scalar multiplication, that we can see। Okay? Similarly, if we talk about S3, so वहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन लेते हैं, let's say we are taking h और इसका बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मान लेते हैं उस लिमिट को L1 है, और मैंने दूसरा फंक्शन लिया x टेंडिंग टू 3 पे k, उसका भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इट विल बी L2। नाउ इफ आई परफॉर्म द एडिशन दैट इज h plus k, what we will get, the limit will be sum of these two limit by algebra of limit,
It will be L1 plus L2. That means ultimately the limit exists, so it belongs to the set S3 H plus K. और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें अल्फा टाइम्स करके एच अगर हम करेंगे so we'll get alpha times L1. So this is also existing only because alpha is a real number and L1 और L1 भी हमें पता है कि रियल नंबर ही है. So overall alpha times L1 we are getting some number which exists. So this alpha H also belongs to S3, correct? So from these two conditions, again we say that S3 forms a vector space over R. Now अगर हम S2 की बात करते हैं, S2 मान लेते हैं उसमें हमने एक G लिया S2 में, so it will satisfy this condition, limit extending to 3 G of x equal to 1 आएगा. और एक और हमने उसमें फंक्शन लिया H, suppose extending to 3 H of x will be 1. Now if I add both of them, limit extending to 3 G plus H अगर करेंगे तो इनका लिमिट भी ऐड होगा 1 plus 1, दिस इज 2. लिमिट यहाँ पे क्या मिला इस फंक्शन G plus H का 2, so that will not belongs to S2 क्योंकि लिमिट सारे भी फंक्शन जो भी S2 में आएंगे उनका लिमिट हमेशा 1 होना चाहिए when x tends to 3, लेकिन यहाँ पे हमें लिमिट 2 मिला, so that doesn't belongs to S2. This means it is not closed under addition, so we will reject S2. Hence the correct option is C. S1 and S3 forms the vector space but not S2. Moving to the next question. Question number 8. यहाँ पे हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी गई है, हमें चेक करना है इनका जो सोल्यूशन है क्या वो रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करेगा या नहीं, या इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा. सो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके हम चेक करेंगे whether the equation is consistent or not, whether the system is consistent or not rather. So सबसे पहला हम इसको बोलते हैं equation 1, this is equation 2 and this is our equation 3. हम देख सकते हैं यहाँ भी हमारे पास 3xy है और यहाँ भी हमारे पास 3xy है. तो अगर हम equation 1 minus equation 2 करते हैं, what we will get, 2x minus x minus 2x is minus x, then we will get plus x square minus y और 6 minus 5 is 1. So यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिली, x square minus x minus 1. Now इस y की वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 3, so from 3 what we get, x minus x square और y का वैल्यू क्या है, x square minus x minus 1 equal to 7. So this x square gets cancelled and x gets cancelled. We are getting minus 1 equal to 7, which is completely meaningless. Correct? It has no meaning. Minus 1 is not equal to 7. So directly we say that this system has no solution. Hope you understood. Moving to the next question. Question number 9. We have been given V as a vector space and it is a space of all real valued continuous function in the closed interval 0 and 1, 0 to 1. W is a subspace of V which is spanned by this set containing sin x, cos x and tan x. हमें find करना है what is the dimension of W. So हमें check करना होगा whether these three are linearly independent or not. From there we will conclude the dimension, correct? So that will be our approach. Let us check that. Sin x, cos x, tan x. तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं. मान लेते हैं we have a sin x plus b cos x plus c tan x. हम अपने इंट्यूशन से बोल सकते हैं कि they will be linearly independent because tan x is a rational function that is not a linear combination of sin and cos. So these three ultimately we are going to get linearly independent. Let us see how we get that. So we can write a sin x plus b cos x. अगर हमें तीनों कोएफिशिएंट a, b, c 0 मिलते हैं, then we conclude that sin x, cos x, tan x are linearly independent. So that is the approach we are going to follow. Sin x को हम लिख सकते हैं, tan x को लिख सकते हैं sin x over cos x equal to 0. Again हम थ्रू आउट cos x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं because cos x is not equal to 0, correct? In this interval
0 to 1, right? So if we multiply, we get a sin x cos x plus b cos square x, and here we get c sin x equal to 0, करेक्ट। अभी हम यहां से क्या बोल सकते हैं, हमें पता है कि दिस इक्वेशन इट होल्ड्स फॉर ऑल x which belongs to the interval 0 to 1। अगर हम बात करें at x equal to 0 की, so we will get this thing as 0, this thing as 0 because sin x is 0 at 0. We will just get b cosine square 0 equal to 0 and cos 0 is 1. So this concludes b equal to 0. Correct? So at some value of x, we'll try to find all these three values of the coefficient. Correct? So we are getting b equal to 0. Now substitute b equal to 0 in this equation. This will become a sin x cos x, p is 0. So second term vanishes. Now we get c sin x equal to 0. Taking sin x outside, we have a cos x plus c equal to 0. Since sin x is non-zero for all x in the interval 0 to 1, open interval, because x equals to 0 we already considered, so x belongs to open interval 0, 1, in that case sin x is non-zero. So for this equation to hold, a cos x plus c has to be 0, correct? Now we evaluate at x equals to pi over 4. We get a cos pi over 4 is 1 over root 2 plus c equal to 0, correct? So from this, what we get, the value of c minus a over root 2. Take some other value, pi over 6. You might ask why we are taking these specific values only, 0, pi by 4, pi by 6. तो कोई इसका पर्टिकुलर रीजन नहीं है, जस्ट बिकॉज ये स्टैंडर्ड वैल्यूज वी नो एंड दैट बिकम इजी फॉर आवर कैलकुलेशन, इसलिए हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। सो x इक्वल्स टू पाई ओवर 6 अगर हम ले यहीं पे, सो a cos x मतलब a पाई ओवर 6 30 डिग्री, cos 30 वी नो इट इज रूट 3 ओवर 2 प्लस c इक्वल टू 0, करेक्ट? अगर यहीं पे इस c की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें, a रूट 3 ओवर 2 माइनस a ओवर रूट 2 equal to 0. If we take a common, we get root 3 over 2 minus 1 over root 2 equal to 0. So this quantity is non-zero. This will imply is a equal to 0. और यहाँ से अगर उस a को 0 put करेंगे, we will get c equal to 0. So ultimately what we are getting, a equal to b equal to c equal to 0. So हमारा जो सेट था sin x, cos x और tan x का, ये जो स्पैनिंग सेट था, ये हमें क्या मिला, इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो सिंस इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, व्हाट वी कैन से, एंड देयर आर थ्री एलिमेंट, sin x, cos x, tan x, so our correct option is option 3. Moving to the next question, which is this question number 10. Again this is very good question. यहाँ पे हम क्या करेंगे, let us see this. हमारे पास W एक पॉलिनोमियल दे रखा है ऑफ मैट्रिसेस का, B इज अ मैट्रिक्स। यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है कि अगर हम B स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं 0 1 0, हमें फाइंड करना है W के डायमेंशन D को, सो 0 1 0 0 0 1 1 0 0, इसका स्क्वायर करेगा 0 1 0 0 0 1 1 0 0. व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, first row into first column, if we do, we will get 0 into 0, 1 into 0, 0 into 1. So that is 0 only. If we calculate this, we are getting 0 0 1 1 0 0 and 0 1 0. और एक बार और अगर मल्टीप्लाई करें b स्क्वायर को b के साथ, that means we are finding b cube. So 0 0 1 1 0 0 0 1 0, करेक्ट? b स्क्वायर और b का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0 1 0 0 0 1 1 0 0. What we are going to get is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So यहाँ से हमारा ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि b क्यूब इज नथिंग बट i, करेक्ट?
W का जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री हमें नहीं दे रखा है, करेक्ट. सो वी डोंट हैव द आइडिया अबाउट दैट डायमेंशन. लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि W is nothing but it is being spanned by the vector identity matrix B and B square. ये तो हम बोल सकते हैं ना, because B cube is identity. If we take higher power of B, ultimately we can reduce it to these lower power. Let's say हमने लिया B raised to 4, इसको हम लिख सकते हैं B cube times B. We have that B cube is identity, so identity times B will again give B. B raised to 5 अगर निकालना है, we can write B cube times B square, we get B square ultimately. So any higher power we can reduce it to either I, B or B square. So we are saying कि W को span किया जा रहा है by this element I, P and P square. ये मिला हमें spanning set. अगर हम किसी तरीके से show कर दें these three are linearly independent, then we can say that the dimension of W will be 3. Correct? So that is the approach we are going to follow. Now we have to show that whether they are linearly independent or not. Correct? अभी तक हमें इतना पता चला कि अगर कोई भी हम पॉलिनोमियल लेंगे, वी कैन राइट इट एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई, बी एंड बी स्क्वायर. इतना हमने. सो वी विल टेक लीनियर कॉम्बिनेशन. लेट अस टेक सम अदर वैल्यूज. यहाँ पे हम ले लेते हैं अल्फा आई प्लस बीटा बी प्लस गैमा सी इक्वल टू 0. So alpha times identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Then we get beta times b. b हमारे पास दे रखा है 0 1 0 0 0 1 1 0 0. और gamma times हमने फाइंड किया, सॉरी यहाँ पे b स्क्वायर है, और b स्क्वायर हमने फाइंड किया 0 0 1 1 0 0 0 1 0 इक्वल टू 0 है. तो यहाँ पे मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी 0 का मतलब नल मैट्रिक्स की बात हो रही है. करेक्ट. नाउ अगर इन तीनों को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट वी गेट अल्फा बीटा गामा, देन वी विल गेट गामा अल्फा एंड बीटा, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्फा आएगा, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे गामा. इक्वल टू हमें क्या करना है, नल मैट्रिक्स 0 0 0 कंपेयर करें. सो व्हाट वी विल गेट अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज जो हमारा स्पैनिंग सेट है आई, बी एंड बी स्क्वायर, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो ये हो गया हमारा बेसिस ऑफ स्पैनिंग एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो दिस फॉर्म बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस, जो भी हमारे पास वेक्टर स्पेस दे रखा है. हेंस उसका जो डायमेंशन होगा, जिसको स्मॉल डी से हम डिनोट कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू 3. सो वी आर गेटिंग द डायमेंशन इक्वल टू 3. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शंस. सो लेट अस बैक टू दिस क्वेश्चन. सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ d as 3. So obviously d does not satisfy the first condition, neither the second condition, लेकिन it satisfy the condition third and fourth. So correct option is C and D. So this is the approach we are going to follow. And there is a second approach where we can use the degree of the minimal polynomial, which will be equal to the dimension of this vector space W. And if you check, you will get the degree, or if I say you will get the minimal polynomial here in this case for the given matrix B as x cube minus 1. So degree is 3. So from there also you can say that the dimension will be equal to 3. So this is the alternate approach. Hope you understood. Thank you for watching. Let's meet in the next video with some other new questions. If you have any doubt, you can ask in the comment section.